Welcome students, myself Dr. Sadhna Puri, and I will be taking with you the fourth unit of second semester. In the first semester, you have studied about the basic chemistry, that is, you have gone through the basis of organic, inorganic and analytical chemistry. But now you are moving to the applied chemistry, which is new to you, right? In the first thing which comes, or with the terms which we will be using in medicinal chemistry, will be pharmaceutical chemistry, and this pharmaceutical chemistry is a broader field which includes organic, inorganic and analytical chemistry related to pharmaceuticals. अब आपको ये समझ में, आपके लिए बिल्कुल ये नया वर्ड है, pharmaceuticals. Now what is pharmaceutical? It is connected with the production of medicines and drugs. Now the second term which will come in your medicinal chemistry will be pharmacy. अब अगर हमको कहीं पे जाना है, किसी शॉप में जाना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें मेडिसिन लेने उस शॉप में जाना है. We will say that we will go to the pharmacy and from there we will take the drug. So the pharmacy is a place where you can buy medicine and drugs. जैसे अगर हमें अपने हेयर कटिंग के लिए जाना है, then we will say that we are going to the salon. When you have to purchase the medicines and drugs, you will go to the pharmacy. Next term which will be used will be known as pharmacists. Pharmacist is a person who prepares these drugs. जैसे chemist हम कहते हैं, chemist क्या करता है? It make a compound, synthetic compounds. तो हम उसको क्या कहेंगे? Chemist कहेंगे, right? So we have come to the three terms, that is pharmacy, pharmaceutical chemistry and pharmacists, right? So now we will move further. Now let us come to the point, that is medicinal chemistry. This medicinal chemistry emphasizes mainly on the synthesis and structure activity relationship of the drug with the receptor. जो भी drug है, जो हम पढ़ेंगे, it should join to some receptor, and after it will be joined to the receptor, it will show its activity. This receptor which is present in our body is proteins and enzyme. So in short, we will say that the medicinal chemistry will emphasize on SAR, that is structure activity relationship, how the drug activity is related to the body. Now this medicinal chemistry may be included, और हम या ये कहें कि ये जो medicinal chemistry है, it will be included in the pharmaceutical chemistry. Now the question arises, what is the difference between medicine and drug? Medicinal chemistry में हमने देखा कि हम medicines के बारे में पढ़ते हैं और drugs के बारे में पढ़ते हैं. जब हम drug का नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है कि ये ड्रग्स आखिर होती क्या है, ये तो बहुत खराब चीज है and we should not take it. But there is a difference between a medicine and the drug. We must know what is medicine and what are drugs. Drugs are addicting and would cause the withdrawal effects, whereas a medicine, or we can say the medicines are non-addicting. हम medicines लेते हैं, if we are sick, we will take the medicine and we will take it
for 3 or 5 days. When we will be all right, we will just stop taking the medicine. But in the case of drugs, person becomes addict. That means उसको एक आदत सी पड़ जाती है और कुछ टाइम के बाद वो चाहता है कि मुझे इसी टाइम पे कोई चीज मुझे मिल जाए. That means the chemical which people use to give them pleasant or exciting feelings, then it is illegal in many countries. आप ड्रग्स जो है वो नहीं ले सकते. इट इज इलीगल. द गवर्नमेंट विल टेक एक्शन ऑन यू. ड्रग्स, दैट मीन्स ड्रग्स टेक अवे कंट्रोल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड फ्रॉम यू. इसको बहुत अच्छी तरह समझें कि हम क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ड्रग्स जो हैं वो हमारी बॉडी, ब्रेन को जो है वो कंट्रोल खत्म कर देती है, राइट. बट इन द केस ऑफ मेडिसिन्स, रिवर्स दिस. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जिससे कि हमारी बॉडी का या माइंड का कंट्रोल चला जाए. तो मेडिसिन्स आर और दे रिवर्स दिस एंड रेस्टोर द कंट्रोल बैक टू यू, राइट. दैट मीन्स हम अब दोनों को डिफाइन करेंगे. This drugs and medicine, they both come under the medicinal chemistry. और अगर हम इसको बहुत अच्छी तरह डिफाइन करें और हम ये देखें कि हमें क्या पढ़ना है, हम ड्रग्स भी पढ़ेंगे, हम मेडिसिन्स भी पढ़ेंगे. तो ड्रग्स टेक अवे कंट्रोल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड फ्रॉम यू, whereas medicines reverse this and restore the control back to you. We must know the difference between medicines and the drugs. हमको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आखिर में मेडिसिन और ड्रग्स में फ़र्क क्या है. हम कई बार ड्रग्स कहते हैं और ड्रग्स का मतलब दूसरा हो जाता है और मेडिसिन्स का मतलब दूसरा होता है. The medicines, they are used to cure diseases, right? And the drugs may be used to cure diseases. यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज करा है may be, right? That means दोनों ही हम डिजीज के लिए यूज करते हैं. ड्रग्स को हम स्मॉलर क्वांटिटी में अगर यूज करेंगे it will be beneficial, but if we take a large amount of drugs or to a longer period, then it will harm you or it will affect your brain, right? And the second which comes, the difference between medicines and drug is it is safe for human body, whereas the drugs may be harmful to human body. Harmful mean क्या होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लेने पर हमको इसकी आदत पड़ जाती है and which is very bad. और इस आदत को छुड़ाने के लिए we have to withdraw it and it will have a very bad consequences, right? Now the third have significant toxic effect or side effect. Medicines, they have a significant effect. कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे अंदर जाती है तो उसका कोई इफेक्ट तो होता है, but it is not that dangerous, whereas in the case of drugs it may be significant and toxic effects. It will cause a toxic effect. Now the fourth difference is that after the ailment is cured, there is no addiction among the patients to use these compounds again, right? But in the case of drugs, we can see that after the ailment is cured, the patient might develop an addiction towards these compounds. Again, हम बार बार चाहते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए. इसका एग्जाम्पल है हेरोइन, मॉर्फिन. ये इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन. अगर हम लें तो पेन किलर के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम बार बार यूज़ करेंगे सो एवरी 24 आवर्स
we will have an urge to get the drug, right? So now we can say that any substance which is other than food, खाना जो हम खाते हैं उसके अलावा जब हम कोई भी चीज लेते हैं, that is used to prevent, diagnose, treat or relieve symptom of disease or abnormal condition. हम खाना जो खाते हैं वो तो ठीक है, हमें हमें चाहिए, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो उसके अलावा हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेडिसिन की तरह या ड्रग्स का नाम दे सकते हैं. और नाउ वी विल से दैट द ड्रग्स कैन ऑल्सो इफेक्ट how the brain and the rest of the body work and cause change in mood, awareness, thoughts, feelings and behavior, right? So a chemical which people use to give them pleasant or exciting feeling, it is illegal. अगर कोई भी दवाई हम ऐसा लें जो हमारे ब्रेन को, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस करे, दैट इज इलीगल, बिकॉज इट बाय दिस टेकिंग द कंपाउंड वी विल बिकम addict of that compound, which is banned in many countries to use the drug.